पुणी तेजिला टारिफ युद्ध अमेरिका रे निर्मित हेउनथिबा सबु कार उपरे 25% शुल्क लगाइला अमेरिका। आमदानी कार उपरे 25% टिकस लागिबो। एप्रिल 3 रु एही टारिफ लागू नै अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प घोषणा करिसंती। यह अमेरिका रे घरोई उत्पादन को प्रोत्साहित करिबो। व्हाइट हाउस रो एपरि निष्पत्ति द्वारा प्रभावित हेबे विभिन्न राष्ट्र। कार दर बढ़िबो एवं बिक्री कमिबो बोली कहा जाउछि। अन्यपटे टिकटक किणवाकू अनुमति मिलले चीन उपरे टिकस कोहल कराजिबो बोली अमेरिका कहिछि। तेबे ट्रम्प को नुआ टारिफ रु भारत बर्ती जिबा संभावना रहिछि। चीन, मेक्सिको एवं कनाडा सह सामिल होई न पारे भारत। सरकारी सूत्रରୁ ଏହି सूचना मिलिछि। दुई देश मध्य वाणिज्यिक आलोचना सावलील भाव चली। एप्रिल 2 रे भारत उपरे अमेरिकार रेसिप्रोकल टारिफ लागिबा नै कोनोसी सूचना नाही। And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We start off with a 2.5% base, which is what we were at, and we go to 25%. And basically, as you know, and as you've been saying, not reporting as accurately as it should be reported because it's a massive story. Business is coming back to the United States so that they don't have to pay tariffs. And I think also because of November 5th, the election, they're very happy